Hello students, today in our E-class of Sanskrit, we will learn and understand chapter 4, Vallavi Vidyasthanakam. Vallavi University was very famous ancient learning center of India. In ancient Greater India, there were many great centers of learning in many big cities where scholars from different countries came for study. In Gujarat, Vallavi was one of them. In this chapter, introduction of Vallavi University, its teaching and learning methods and other information is given in very simple and interesting manner. So before translation, let's understand the summary of this chapter in short. स्टूडेंट्स, आज भारत में बहुत से ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटीज हैं जहां एडमिशन मिलने पर स्टूडेंट्स अपने आप को धन्य मानते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय भारत में थे जहां दूर देशों से छात्र पढ़ने आते थे। वल्लभी उनमें से एक था। जैसे मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, वैसे ही गुजरात में वल्लभी था जहां दूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। वर्तमान समय में गुजरात के भावनगर जिले में वल्लभी नाम का उपनगर मीन्स सबब था जहां वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वास्तव में यह उपनगर अध्ययन अध्यापन का केंद्र था। यहाँ 18 प्रकार की विद्याएं जैसे वेद, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद और उपवेदों का अध्ययन होता था। यहाँ बौद्ध और जैन धर्मों का भी अध्ययन होता था और यह बौद्ध और जैन धर्म का दर्शन का केंद्र था। चौथी शताब्दी में यहाँ ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी रहते थे। प्रसिद्ध बौद्धाचार्य स्थिरमति और गुणमति एवं जैनाचार्य श्रीमंडवादी सूरी भी यहीं पर शिक्षित हुए। यहाँ छात्र अपनी रुचि और बौद्धिक क्षमता के अनुसार अध्ययन करते थे। यहाँ प्रवेश के लिए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम देनी होती थी और उसे पास करने पर ही उन्हें यहाँ एडमिशन मिलता था। 5वीं शताब्दी में यह उपनगर मैत्रक राजाओं की राजधानी थी और मैत्रकों की व्यवस्था के अनुसार जब स्टूडेंट्स अध्ययन समाप्त करते थे तो उन्हें एक डिबेटिंग असेंबली में अलग अलग विषयों पर डिबेट करनी होती थी और जिसमें वह विषयों को सपोर्ट करते थे और उनके अगेंस्ट में अपने मत देते थे। इस डिबेट में जीतने वाले छात्रों को मैत्रक राजाओं की ओर से जमीन उपहार में दी जाती थी और यूनिवर्सिटी के द्वार पर उनके नाम उत्कंठित मींस इंस्क्राइब्ड किए जाते थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ और उनके द्वारा दिए गए उपदेश उस समय आगम नाम से प्रसिद्ध थे और ये आगम लगभग 500 वर्षों तक मौखिक परंपरा मींस ओरल ट्रेडिशन के रूप में सुरक्षित रहे। बाद में जब प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन की प्रेसिडेंटशिप में जैन साधुओं की एक सभा ने आगम ग्रंथ लिखने का प्रस्ताव रखा और बाद में उसे लिखा गया, तब ये ग्रंथ वल्लभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध हुए। 9वीं शताब्दी में यह वल्लभी नगर नष्ट हो गया, किंतु आज भी इसके अवशेष हमें इसकी समृद्धि की जानकारी देते हैं। इस तरह वल्लभी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विद्या केंद्रों में से एक था और इतिहास में यह आज भी है। So students, this is all about the summary of this chapter. Now let's have a look at translation. संप्रति विविधा विश्वविद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति. At present, there are many universities that are very famous. तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेश प्राप्य छात्र स्वात्मानं धन्यं मन्यते. Among them, there are such that a student considers himself lucky if he gets admission to study there. एवं एव पुरा काले अपि अस्माकं भारते देशे एतादृशा बहवः विश्वविद्यालया आसना. Similarly, in the past also,
There were such universities in our country, India. Students coming from far countries considered themselves blessed, having secured admission there. Eshu Ekatama Vallavi Vishwavidyalaya. Among these, Vallavi University was one. मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्. As there was Nalanda in the kingdom of Magad, similarly here in the Gujarat there was Vallavi. अत्रापि सुदूरात् देशात् जना अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म. Here also people came for study. At अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लवी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीन काले वल्लवी विश्वविद्यालय आसीत्. At present in Bhavnagar district of our Gujarat state there is one suburb by the name Vallavi, where in ancient time there was Vallavi University. वस्तुतस्तु इदम् उपनगरं प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम् आसीत्. Actually, this suburb was the center of learning and teaching from the ancient time. पूर्वम् अत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म. In the past, here the learning and teaching of 18 laws means vidyas used to take place. एतासु सर्वासु चत्वारो वेदा षट् वेदांगानि पुराणं न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद चत्वारा उपवेदा च समाविष्ट सन्ति. Among them 4 Vedas, 6 Vedants, Puranas, Nyaya, Mimamsa, Smritis, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Arthaveda and the 4 Upvedas were included. Tata Bauddha Darshanasya Jaina Darshanasya cha idam kendram sanjatam. Later, this became the center of Jain and Buddhist philosophy. ख्रिस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारा स्कंद स्वामी संजाता. In the 4th century AD, Skanda Swami, the commentator of Rig Veda, lived here only. सः अत्रैव अवसता एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययन अपि प्रचलिता स्म. This indicates that in the Gupta period, even the study of Vedas was going on. ख्रिस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्याम् एव सुप्रसिद्धौ बौद्धाचार्यौ स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लवादसूरी च अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म. In the 4th century AD only, the very famous Buddhist teachers Sthirmati and Gunmati and the Jain teacher Sri Mallavadi Suri were studying here only. एतत् सूचयति यद् अत्र जैन बौद्ध दर्शनानाम् अपि अध्ययनं प्रचलितः स्म. This indicates that the study of Jain and Buddhist philosophies was also going on here. अत्र यथा रुचि यथा मति छात्रा अपठन्. Here the students studied according to their liking and intelligence. प्रवेशार्थम् अत्र प्रवेश परीक्षा अपि भवति स्म. An entrance test was also taken for admission here. ताम उत्तीर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्य आसीत्. Only after passing the test, admission was possible. ख्रिस्तस्य पंचम्यां शताब्द्याम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्. In the 5th century AD, this suburb was the capital of Maitraka kings.
मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्त्यन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म. According to the procedure led by Maitrakas, after the completion of study, a session of interpreting the meaning of scriptural passages means Shastrarth in the debating assembly was held there. शास्त्रार्थे विभिन्नानां मतान्तराणां खण्डनं मण्डनं पूर्वकं विमर्श भवति स्म. There used to be a discussion consisting of refutation and proving, establishing of different ideas before arriving at a conclusion. अनेकस्मे विजयी जनानां राजा पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत्. The king gave land as a reward to the many candidates who were victorious. कदाचित विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उत्कीर्णितानि अभवन्. Sometimes the name of the victorious were inscribed on the door of the university. ख्रिस्तस्य पूर्व प्रायः पंचम शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्. Lord Mahavir was born approximately in the 5th century BC. तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः स आगम नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते. The instructions given by Lord Mahavir was famous by the name आगम. अयम आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपराया सुरक्षिता आसीत्. This agam was safe for 500 years in the oral tradition. एवं ही श्रूयते यत् ख्रिस्तस्य तृतीयायां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायां एका जैन साधूनां समिति मिलिता. It is indeed heard that in the 3rd century AD, a council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. अस्याम् आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्. In this meeting, the proposal of writing down the Agam Granthas, books of instructions, was placed. अत्र लेखबद्धा वाणी बलवी वाचना नामा प्रसिद्धा जाता. Speech of Lord Mahavir transcribed here became famous by the name Balavi Vachana. ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां बलवी नगरस्य विनाशः अभवत्. In the 9th century AD, the suburb of Balavi was ruined. परंतु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति. But its remains indicates its prosperity even today. एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु बलवी एकतमः आसीत्. इतिहासे च अद्यापि वर्तते. In this way, Balavi was one of the ancient centers of learning in India, and in history it still is. So students, this is all about the summary of the chapter and translation of the chapter. I hope you will be able to understand this chapter. Please write down the translation in your fair notebooks. Thank you.